अभी तक हमने वर्डप्रेस की डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर किया है, स्पेशली फॉर्म्स। फॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? फॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज यू वांट पीपल टू इंटरेक्ट विद यू एंड यू वांट टू कैप्चर डेटा ऑफ द पीपल जो आपकी साइट पे आ रहे हैं। या तो आप उनका डेटा कैप्चर करना चाह रहे हैं या साथ ही साथ आप उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि और आपसे किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करें। दैट्स व्हाई वी हैव अ प्लगइन कॉल्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो हमने अभी आपको ट्राई करवाया। साथ ही साथ देयर आर अदर प्लगइन्स दैट वी मेड यू ट्राई, प्लगइन्स लाइक WP माइग्रेशन। क्या है WP माइग्रेशन? As you tried it, it's a plugin that you can use to migrate content from one hosting to another hosting. Yeah, from one WordPress website to another WordPress website. इसी तरह के different plugins हमने आपको try करवाए। And when it comes to WordPress, it's a sea of plugins. It's a sea of opportunity that you have. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। And this is coming from me, जिसने वर्डप्रेस पे 13 से 14 साल अपने करियर के लगाए हैं, कि दिस सी विल नेवर एंड। वर्डप्रेस हैज़ एन ओशन ऑफ प्लगइन्स, डिफरेंट तरह के प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ उनमें से फ्री हैं बट कुछ उनमें से पेड है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ योर वेबसाइट, डिपेंडिंग on the needs of your client's website, you can create magic with WordPress. And it's dependent on you कि आप कैसे वो मैजिक क्रिएट करेंगे, कैसे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जिससे आप पैसे बना सकते हैं। Because at the end of the day, WordPress is an opportunity to create money. You can create money as a freelancer. आप freelancing वेबसाइट पे जाके अपनी WordPress की सर्विसेज को बेच सकते हैं। Yeah, you can create money as an entrepreneur. You can launch your own e-commerce website and you can make money. या अगर आप स्मार्ट हों तो आप वर्डप्रेस से पैसे बना सकते हैं as a smart worker as well. But in this topic, we want to discuss responsiveness and we want to discuss responsive shortcode. What is responsive? ये लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा ऑनलाइन कि क्या ये साइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। What is responsiveness? So responsiveness is how your site reacts basically on the different resolutions के different devices. तो अगर आपकी साइट को आप मोबाइल पे देखें तो क्या उसका कंटेंट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ, क्या नहीं। तो रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली मीन्स कि हाउ योर website looks on a desktop, how your website looks on a tablet, and how does it look on a mobile. And usually, thanks to Gutenberg, mostly all WordPress websites are responsive now. And usually it depends on theme, but all WordPress websites now have a responsive theme. And it would be very rare to find a theme which is not responsive. In fact, आप कोई भी plugin use करते हैं, बेशक वो बिल्डर प्लगइन हो या कोई भी थीम यूज़ करते हैं, all of them have the responsiveness built in to your theme and to your website. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या करना है, हमने वो रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स एक्सप्लोर करने हैं, ऐसे शॉर्ट कोड्स which will allow us to create a responsive website. So we'll see what are those short codes. We'll see what kind of responsive shortcodes there are out there. हम इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आपको मोबाइल तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा इसका एक लाइव डेमो दें उससे आप देख सकेंगे कि रिस्पॉन्सिव शॉर्टकोड्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड हाउ दे कैन हेल्प यू क्रिएट अ वेबसाइट which is not only good on desktop, which is not only good on tablet, but which is also good on mobile. So let's go live and try out some of the responsive shortcodes and shortcodes which you can use to create responsive elements on your website. It could be in form of forms, it could be in form of pricing tables, it could be in form of images, it could be in form of galleries, it could be in different forms. तो ये जो different responsive elements हैं
ये हम ट्राई करेंगे, ये देखेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में डाल सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल सी कि हाउ you can improve the look of your WordPress website for people who are viewing it on mobile. So now let's try it out. So if I were you, I would go to Google and I would write responsive test. So responsive test will help you find those websites जो कि आपको अपनी वेबसाइट की responsiveness में help कर सकती हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं there is responsivedesignchecker.com and there is responsive nature, responsive design. तो हम क्या करते हैं, हम इनको टेस्ट करते हैं. But before we do that, we are going to check out a site which can help you learn skills, skillsfirst.org. मैं आपको ये साइट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपने रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं कि ये साइट रिस्पॉन्सिवनेस में कैसी लगती है. सो ये साइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि ये साइट डेस्कटॉप पे इट लुक्स इन अ सर्टेन वे. बट हाउ वुड दिस वेबसाइट लुक if we were to test the responsiveness of this website? So we'll go back to the other tab and we'll click on responsivedesignchecker.com and we'll click the URL and enter here and we'll click on go. और आप देख रहे हैं कि वो साइट की एक मुझे लाइव रिस्पॉन्सिवनेस दिखा रहा है ये टूल. सो लेफ्ट पे डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, तो दिस इज हाउ द साइट लुक्स ऑन डेस्कटॉप. But how would the site look if I were to view it on tablet? अगर मैं टैबलेट पे व्यू करूं और मेरे पास टैबलेट हो Apple iPad Pro, so this is how the site would look. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह थोड़ी सी साइट चेंज हुई है. But how would this look on a mobile is the bigger question. So let's say I have the latest iPhone 7. So this is how the site would change and look on a mobile. तो आप देख सकते हैं कि कैसे साइट ने लाइव रिस्पॉन्सिवनेस शो की. तो यू कैन सी द डिफरेंस. पहले जब टैबलेट पे थी तो इट यूज टू लुक लाइक दिस, डेस्कटॉप पे इट यूज टू लुक लाइक बिगर, एंड देन सडनली जब आप गए एक मोबाइल पे तो साइट रिस्पॉन्सिव होगी एंड इट लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट नाउ. सो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली मीन बाय the responsiveness of a particular website. और इसी responsiveness को हम टेस्ट करेंगे with saad.com को लॉगिन करके और उसके अंदर ऐसे शॉर्ट कोड्स को ढूंढ के जो कि इस साइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं. We'll go and try to find plugins, look for responsive shortcodes, and we'll try to see कि हमें कौन से ऐसे शॉर्ट कोड प्लगइन मिलते हैं जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिव हैं. अगेन तो डिफरेंट तरह के आपको मिल रहे हैं. पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिव है, स्लाइडर आपके पास रिस्पॉन्सिव है, आपके पास बटन्स का एक है, मेटा स्लाइडर है, रिस्पॉन्सिव फोटो गैलरी है. बट माय फेवरेट प्लगइन इज शॉर्ट कोड्स अल्टीमेट. It's a very comprehensive set of shortcodes that you can create to add responsive elements to your website. So we'll click on activate. So हमने भी install किया shortcodes plugin and then we'll go to a page and edit the page to add those shortcodes. तो आप देखेंगे मैंने page edit पे click किया, contact form में निकाल दूंगा. I'll try to insert a shortcode and I'll try to look for a responsive column. Column का journal content है, I can click on update. And ये journal content आपको साइट में नजर आएगा column content के नाम से. Obviously you'll have to add more content to show it कि कैसे आप different columns में इसको distribute कर रहे हैं and then go back to responsive checker to test it out. तो ये एक तरीका था जिससे आप responsive shortcodes को अपनी साइट पे ऐड कर सकते हैं to make your content look beautiful on mobile devices because mobile is the future. Mobiles are everywhere. हर कोई मोबाइल पे कंटेंट एक्सेस करता है. इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड्स को अपनी वेबसाइट में डाल के कंटेंट को मोबाइल पे ब्यूटीफुल बना सकते हैं.